Now our next topic is measures of dispersion. Dispersion, as we have discussed in the first session, that what is dispersion? Dispersion means the spread of my data from the average. Spreadness, if we find out the spreadness of my data as per my average, so it will be the dispersion. Dispersion मतलब अगर आप कोई चार्ट बना रहे हो, like you can see in this place, like if I create a chart in this, like I created chart like this. सो हाउ मच इट्स डिस्पर्स, यहाँ से यहाँ तक का डेटा है ना, दिस कितनी दूरी है, इसको पता करने के लिए ये हमारी सेंटर लाइन है या मिड या हमारी मीन है, इससे कितना एवरेज से दूर है डेटा स्प्रेड है, तो उसे हम डिस्पर्स कहते हैं। और उसे कैसे निकाला जाता है वो देखो। सो डिस्पर्स इज why disperse matters. So while average giving gives us a center value, they doesn't show how much values varies. जब हम हमारे पास कोई सारा बहुत सारा डेटा होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का या एक कॉलेज का मेरे पास 200 कैंडिडेट का डेटा है, और उन डेटा का मैंने एक एवरेज निकाल दिया, एवरेज स्कोर निकाल दिया कि कितने मार्क्स कितनी परसेंटेज उनके आई है, तो मुझे पता चला एवरेज स्टूडेंट की आई है 60%। तो 60% जो है वो डिनोट कर रहा है इन सभी 200 कैंडिडेट को। बट अब मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि किसी कैंडिडेट का आया होगा, हो सकता है 20% भी आया हो, किसी पर्सन का हो सकता है 90% 80% भी आया हो, तो अधिकतर लोग जो होंगे वो इसके अराउंड होंगे। बट मुझे ये जानना है कि मेरे एवरेज से मेरा डेटा जो है वो कितना डिस्पर्स है, कितना दूर दूर है, वेरी करता है। ठीक है ना। उसे पता करने के लिए हम ये डिस्पर्जन निकालते हैं। डिस्पर्स रिवील्स द डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डेटा स्प्रेड अराउंड द एवरेज। एवरेज के अराउंड जितना भी डेटा है वो कितना किस तरीके से स्प्रेड हो रखा है। क्रूशियली फॉर द अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी इन द हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट कंटेस्ट। ठीक है ना। इसमें हम हेल्थ केयर की बात करें जाए तो यहाँ पे कहाँ हेल्प करेगा, तो कंपेयर वेरिएबिलिटी इन द वेटिंग टाइम एंड ट्रीटमेंट आउटकम अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द फैसिलिटी। मतलब हम ये वेरिएबिलिटी को जानेंगे कि भाई कितना वेटिंग टाइम हमारा हमारा पेशेंट को होता है, वेटिंग टाइम कितना रखता है, और उनका ट्रीटमेंट का आउटकम क्या है। कॉस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। एनालाइज वेरिएशंस इन द हॉस्पिटल कॉस्ट, ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस एंड बजट एलोकेशन। मॉनिटर कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर, रिलायबिलिटी को भी ठीक करता है। There are two categories in dispersion measurements. So first is absolute measurement. Absolute measurement में express करते हैं dispersion in the same unit as the original data, and these includes उसमें कुछ techniques हैं जिसके through ये निकाला जाता है. One is range, second is quartile deviation, and then is mean deviation, then standard deviation, then variance. There's another the types, that is relative measures. And what does it mean? It is express dispersion as a ratio or percentage, making them unitless and ideal for the comparing different data set regardless for their skills. If we wanted to find out the dispersion through the range, so how we can get it? ये बहुत आसान तरीका होता है जिससे डिस्पर्जन निकाला जाता है। सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू है और जो उसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू है, उन दोनों को माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कितना डिस्पर्स है। फॉर्मूला क्या है रेंज का? एल माइनस एस। एल मीन्स लार्ज नंबर एंड एस मीन्स स्मॉल नंबर। Then if you wanted to find out the coefficient of range, so there is the formula large value minus L small value divided by large value plus small value. Relative measurements of comparison. Like if you wanted to find out, and we have an example, like we have a waiting time data, कितना waiting time लगता है candidates को, 5, 8, 10, 12 और 15, 5 लोगों का डेटा है हमारे पास ये। तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 15, सबसे लोएस्ट वैल्यू है 5। नाउ वी गॉट दिस 10, right? How we get it? So for finding it, we deduct from the higher value to the lower value, and we got 10 minutes. So we will find out. So our data is dispersed around 10 minutes. So then there is a next method through which we can find out, that is quartile deviation, which based on the spread of the middle 50% of the data, making it less sensitive to extreme values, that range. So for finding it, we have a formula.
that is QD is equals to Q3 minus Q1. We will see the example of these questions. But now we are explaining you about the theory part of this quartile deviation. ठीक है ना, हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे. Q3 minus Q1 and divided by 2. So here can we have an example like if we have a Q1 20 and Q3 40. So how we'll get it? So we will first reduce from the Q3 to Q1, then we will divide it by the 2, and we will get the answer. Likewise, we have a one more method which is mean deviation. The mean deviation means the average of the absolute deviation from the mean or median. ठीक ना, ये एब्सोल्यूट डेविएशन होता है जो हमारा मीन या मीडियन निकल के रहता है उससे कितना दूर, considering all values in the data sets. So there is one way for finding it, that is calculate deviation. First we have to calculate deviation, then we have to sum all deviation, then find average. We will see it in the example, then we can understand better. Now the next point is standard deviation, the gold standard deviation, which is also called as the gold standard. The most widely used measures of dispersion showing how value deviate from the mean, essential for the advanced for advanced statistics analysis. So we have a formula for finding and it is very important for the exam point of view. Exam में आता है ये बहुत standard deviation. So we have a formula like square root of the sum of x minus mean the whole square divided by n. For finding it, we have one example. Like if we have a patient visits data, like 3 patients come and visit us, इसमें हमारे पास ये data है like 10, 15 and 20, and if we find out the mean first, then we get 15, और फिर हमने उसका standard deviation भी निकाल दिया यहाँ से. Then for the relative measurements, we have a formulas, this coefficient of variance, coefficient of range, coefficient of standard deviation, and the coefficient of mean deviations. So these are the points. Now we are going to discuss about some practical questions which will help you to understand more better way in this. Let's see. तो इसमें मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को रेंज का करा देता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे. यू कैन सी हियर फॉर फाइंडिंग आउट द रेंज वी हैव अ क्वेश्चन, we have a formula this. You can take a screenshot and I will share you this file also. So we have a formula that if we have a individual series, so for getting out the range, we have a formula that L minus S. And to find out the coefficient of range, we have a formula that L minus S divided by L plus S. And if we have a data of a discrete series, so we have a formula that R is equal to R L minus S and the coefficient for the range, the same formula we will use. And for the continuous, we have a same formula. So here R means range, L means largest value in the series, and S means smallest value in the series. Like we have a situation, we have a question in which we have to observe. Now we have a question like where it's saying that 5 students obtain the following marks in the statistics. 5 students जिनको ये marks मिले हैं. And now we need to find out the range and the coefficient of range. So we have a formula that is range, that is L minus S. So out of these observation, we have a maximum value that is 35. So that will be reduced by the lowest value, that will be the 15. Now we will reduce 35 minus 15, so we get the answer 20. So the range will become 20. तो ये हमारी रेंज बन जाएगी 20. तो बट सिंपल फॉर्मूला है, अगर कभी ऐसा ये आ जाता है पेपर में तो आप इसे बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं. Then there is another formula for the finding out the coefficient of range.
So that is L minus S divided by L plus S. To get the answer, we will subtract the largest value to the smallest value. ठीक है, उसमें से और फिर उसे ऐड भी करके उसमें डिवाइड करेंगे. So we get the answer. So this will become our coefficient of range. And if we have a data of discrete series, the same formula we will apply. तो इसमें भी सेम चीज हमारे पास अप्लाई करनी होगी हमें. The largest value is 70 and the smallest value is 10. Here you can see the largest value here. We do not see the frequency. Frequency is not important for the finding of the range. Frequency को ignore करेंगे हम और इसमें हम variant को देखेंगे. Here you can see the variant. Variant में 70 is the largest value and 10 is the smallest value. So reduce this and we will get the range. Here you can see 70 minus 10, we get 60. And if you wanted to find out the coefficient of range, so there is a formula L minus S, which means 70 minus 10 and 70 plus 10. Then we divide 60 divided by 80, we get the answer 0.75. So if we have a continuous series, so same formula we will apply. And we have this range is equal to L minus S. Here we see the largest or the upper limit of the largest scale. The largest class of our question is 25 to 30. So we get 30 is the maximum value and the smallest value is 5. So then we will get our answer of 25. ऐसे हम coefficient of range भी निकाल लेंगे. So this is about the range. And tomorrow we will discuss some of the cases relating with the quartile deviation and mean deviation and standard deviation. So any doubt from these questions? आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो you can ask me.